am Chinmay Mahapatra. Welcome you all to my channel Chinmay's Fiscos. Today we will be discussing about one part of magnetostatics, that is cyclotron. Basically, cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles or ions to a very high speed by using accelerating potentials. See, I have done this diagram. Cyclotron basically consists of two D-shaped metal boxes which is known as Ds, and they are arranged in such a way that there is a very small gap in between them, and a source of ions or charged particles is placed at the center of the gap between the two Ds, and the two Ds are connected with a high frequency oscillator which provides the high frequency alternating potential to the Ds. So as a whole, these two Ds act as two electrodes, and the Ds are placed inside a metallic box having gas at low pressure. The whole apparatus is placed in between the two pole pieces of a very strong electromagnet, so that the magnetic field is perpendicular to the plane of the Ds. Okay? यहाँ पे है मैग्नेटिक पोल और नीचे भी है मैग्नेटिक पोल. जो Ds होते हैं वो बीच में ऐसे होते हैं, so that the magnetic field lines are perpendicular to the plane of the Ds. Now it's clear? Then what is the condition under which the cyclotron works? The main condition of the cyclotron is the resonance condition. I will tell you about it while I will explain the working of the cyclotron. So what happens inside a cyclotron? The basic principle behind the working of a cyclotron is that when both electric field and magnetic field acts at right angles to each other and act on a charged particle present over there, then the electric field provides the velocity and acceleration to the charged particle, but the magnetic field makes it move in a circular path. So what happens here, when the source of ion produces a particular ion, or suppose let's say a positive ion is produced here, then it will suddenly get accelerated towards that D which is at negative potential at that moment. तो वो कहाँ पे जाएगा? वो चार्ज पार्टिकल उसी D की तरफ जाएगा जो अभी नेगेटिव पोटेंशियल में है. तो फिर क्या होगा? जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स इट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. सो द पार्टिकल वो पहले डी पे जाएगा और फिर यहाँ पे सर्कुलर पाथ लेना शुरू करेगा, लेकिन ये तो एक सेमी सर्कुलर डी है. तो आफ्टर मूविंग ए सेमी सर्कुलर पाथ, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द डी, सडनली द टू डीज चेंजेस देयर पोलैरिटी. दैट मीन्स अभी ये नेगेटिव पोटेंशियल पे था ना, जब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे बाहर आ जाएगा तभी इनका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अभी इसका पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो फिर ये डी क्या करेगा? इस जो पॉजिटिव आयन यहाँ से निकला है वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ. तो यहाँ पे वो ion, the positive ion again gets accelerated and it becomes more and more energetic and gains more velocity. So as a result, its radius also increases. But all this process takes place in a particular condition which I have already mentioned, that is the resonance condition. What is that? In resonance condition, the frequency of the applied alternating potential always remains same with the frequency of the charged particle which is moving inside the metallic Ds. Okay? In that condition, a cyclotron works. So ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही घूम घूम के और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक होता जाएगा, और जब तक ये यहाँ इस डी के पेरीफेरी में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे पॉजिटिव आयन लिया है. तो एक नेगेटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगा जो उसे अट्रैक्ट करके फिर डिफ्लेक्ट कर देगा आउटवर्ड्स
of this device, and that positive ion will get bombarded on a target particle. Okay, this is the process how a cyclotron works. Suppose the positive ion moves with a velocity v, then we can here write it as mv square by r is equals to qvb, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv square by r, so that must be equals to the magnetic force experienced by the charged particle. हम इसमें से निकालेंगे what is r, so r is equals to mv square divided by qvb, that implies that r is equals to mv by qb. So what will be the time period for one complete revolution? T will be equals to the distance traveled divided by the velocity, 2 pi r divided by v. So that is equals to 2 pi mv by qb whole divided by v, that is equals to 2 pi m by qb. तो frequency क्या होगा? F is equals to 1 divided by T, so that is equals to qb by 2 pi m. This is known as your cyclotron frequency. तो जब तक वो पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर से बाहर निकलेगा तब तक उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुका होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गया होगा. तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v max का स्क्वायर, so that is equals to half m, what is v? v equals to q b r divided by m. so मैं लूंगी q b, r की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? कैपिटल R डिवाइडेड बाय m, इसका स्क्वायर. कैपिटल R मैंने क्यों लिया? क्योंकि जब तक वो घूमेगा और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो तब तक तो उसका रेडियस चेंज हो चुका होगा ना, इसलिए मैंने ले लिया कैपिटल R. सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. So that is equals to q square b square r square divided by twice of m. So this is the expression for maximum kinetic energy of the ion when it leaves the apparatus. We can also define this kinetic energy in another way. When the charged particle crosses the gap between the two D's, it gains kinetic energy. How much amount? qb. But during one complete rotation, the charged particle has to cross the gap between the D's twice. So its kinetic energy now becomes 2 into qb. For incomplete rotations, it will be 2n qv. So I can write the kinetic energy as q square b square r square by 2n, that is equals to 2n qv. So thus the particle coming out of the cyclotron possesses an energy of several million volts.